Okay, so today's session we're going to learn further things about the Microsoft tools and the things which was not discussed in previous session. So we're going to discuss in this session. Like you have all know that we have done our home tab. These all are the but I give you a short recap, which was things which remaining in this home tab. Like bullets was remaining. Like you can give your text a bullet as well. Like let's take an example. I write a sentence like this is computer course. I have written a sentence and you can give it a bullet as well. This feature are already mentioned in 2007 Word and it's a old feature. You all know that you can give the bullets to your text. So with this, you all know that you can give a number and alphabets as well. And it's also include the Roman numbers as well. These all are the design and these all are the bullets actually which you can give your heading. You can give your sentences. Other than this, you can make it a slide form as well. Like I've mentioned their new design of the bullet, and as well as there are many other designs you can give to your documents, you can give to your line, or you get either your sentences. You can give it as this form as well. Like if you have to display more detailing about the heading, so in this form you can present like heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5. So in this course you will going to get more bullets. Like आपको इसके अंदर ये होगा कि heading 1 में आपको एक bullet मिलेगी, heading 2 में दो bullet. As you have observed in the figures, like normally ये होता है कि figures होती हैं, figure 1.1, figure 1.2, figure 2.3. इस तरह के जो फिगर के जो नंबर्स होते हैं, in the same way these all are made. So from this you can get to know about the further use of bullets in as like an image form as well. So यहाँ पे ज्यादातर फिगर्स के लिए ये यूज होता है और फिगर्स जो हैं वो इमेजेस से रिफ्लेक्ट करते हैं. It's a part of image, so as we have discussed yesterday. So you can check it, you can practically use it. आप लोग सब जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करें. जिनके पास जो है ये ओल्ड वर्जन्स हैं उसके अंदर ये अपडेटेड फीचर नहीं होंगे, पर उसके लिए you have to update your Microsoft Word. So I will try to provide you an access, like any link or any resources that you can update your Microsoft Word, or if you are using the mobile phones, or if you have the more updated versions, you can also tell us, or you can also share their updated features in the group or in the class as well, so that I can know that you are participating and you are getting many things about this Microsoft Word. So this was actually the bullet feature which we have discussed. So if we move ahead, so there are many other features. Like you can change the sort of text. Like you can make it as a ascending form. Like इसमें ये normally ये होगा कि आपको जो text है वो curve form में आ जाएगा, और बहुत आपको जो curve अभी अभी आप नजर आ रहा होगा ये बिल्कुल सीधी straight form है. This is a simple form. Like I have write this is a computer course, but when I apply this feature, like if I will go to use like sort by paragraph, so it will going to be sorted by paragraph. Normally ये होगा कि जब अभी मैं कोई चीज अगर आपको आपको पैराग्राफ जो है वो अगर टाइप करूंगा, so वो पैराग्राफ फॉर्म में वन बाय वन एक के बाद एक लाइंस आएंगी. पर if I sort it through field one, so it will automatically changes, and then we have to fill these all things, and then the other design would be on your screens. फिर आपको एक अलग तरीके का पैराग्राफ जो है शो होगा, और उसके लिए जो है आप लोग जो है इस फीचर को खुद जो है वो ट्राई कीजिएगा, कुछ टाइप कीजिएगा. कोई आप अभी मैंने आपको जो है वो लास्ट वीक भी एक होमवर्क दिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग का. सो अगर आप लोगों ने इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज किया है, सो आप लोग इसके बारे में आपको अवेयर होंगे इस चीज के बारे में. और इफ यू हैव नॉट यूज दिस, सो यूज इट, अप्लाई दिस on your apply this by yourself and use it, and then tell me that what you have typed and what is the outcome of this feature. My participants, wait a second. Okay, we have 4 participants yet, and uh, I think that there's an internet issue that the participants are not joining. We have in yesterday's session we have Aisha who have took participated in many in questions. She have asked the question as well. She have done many things, and other than this we have Muzammil as well, but he haven't joined yet. So I think he have any issue. So let's resume our session. So moving ahead, and now you can have the theme color, as we have yesterday discussed about this about theme color. So now I think that the home tab is finished, and we have to now move on insert tab. But once thing is remaining, like styles, like how you can give these styles.
यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है स्टाइल्स के आपको वो आपको टेम्पलेट शो हो रही होगी। नॉर्मली ये इसलिए यूज होती है जैसे कि अगर आपने कोई चीज टाइप की है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, आपने कोई चीज अगर आपने टाइप की है, सो it can make your text more effective by giving, like you can add spacing in between the text, or you can make it as a heading form. Like अगर आपने कोई essay type किया, let's take an example of essay, so and if you want to display some text as a heading, so you can choose here, like अब जो है मेरा this is a computer course, so अब ये एक तरह से text form में नहीं रहा, अब ये एक heading बन चुकी है by the style tab. Another thing is that we can use it as a heading 2 as well. So this is actually, this is all is in a small font. यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको लग रहा होगा कि स्टार्टिंग सेंटेंस का जो वर्ड है टी इज ओनली कैपिटल, बट इफ यू चूज द हेडिंग 2, सो द होल टेक्स्ट वाज नाउ इन अ स्मॉल फॉन्ट. तो इस तरह के बहुत सारे डिजाइन वगैरह हैं. यहाँ पे टाइटल के लिए आप बिग फॉन्ट यूज कर सकते हैं. आप सब टाइटल अगर आप किसी चीज का दे रहे हैं, आप किसी चीज को आप उसका रिव्यू दे रहे हैं, सो आप सब टाइटल डिजाइन आप चूज कर सकते हैं. आप इसको इसके इसके अलावा देयर आर मैनी अदर डिजाइंस रिलेटेड टू सब टाइटल. लाइक इन दिस यू कैन हैव योर text, starting word of the text of alphabet T is capital, but in this your all the texts are small. So these are all the things, and each and every design is related to each and every one. सही है. इसमें सिर्फ माइनर इससे बहुत से चेंजेस होती हैं, बाकी सब डिजाइन जो हैं आपके जो हैं आपके प्रोजेक्ट से रिलेट करते हैं. अगर आपकी जो है वो टाइटल है, सो यू कैन चूज टाइटल डिजाइन. अगर आपका जो है वो सब टाइटल है, यू कैन चूज सब टाइटल डिजाइन. और इफ यू हैव एनीथिंग व्हिच यू हैव which you want to highlight, so you can select that text and make it highlight by choosing the strong style. Other than this, if you are writing any quote, if you are stating any quote in between your project, in between your essay, so you can choose the quote style. So this will going to reflect as a viewer, like you have mentioned any quote. So ये सब डिजाइन्स जो हैं वो व्यूअर को अच्छी से अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए और उसको अच्छी से अच्छी तरह जो है अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए सारे फॉन्ट्स जो है अपने एस्से या अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं. Other than this, you can choose any intense quote as well. Subtitle reference you can use either as a website form. आपको वेबसाइट फॉर्म के अंदर भी जो है आप इसको यूज कर सकते हैं. इंटेंस रेफरेंस भी हो सकता है. कोई बुक टाइटल अगर आपने मेंशन करना है, अगर आपने किसी अपने एग्जांपल के तौर पर आपने कोई बुक, कोई नॉवल, कोई स्टोरी या किसी भी चीज का जो है आपने रेफरेंस देना है, सो आप बुक टाइटल जो स्टाइल है उसको यूज कर सकते हैं. आप जो है पैराग्राफ अगर कोई है तो आप पैराग्राफ के लिए जो स्पेसिंग छोड़नी होती है, इफ यू विल गोइंग टू यूज दिस स्टाइल, ऑटोमेटिकली ही विल प्रोवाइड यू द स्पेसिंग दैट विल रिफ्लेक्ट दैट नाउ द पैराग्राफ इज चेंज. नॉर्मली ऐसा होता है कि अब नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज होता है तो हम फर्स्ट लाइन जो है कुछ स्पेसिंग छोड़ के हम स्टार्ट करते हैं. सो दिस style is going to automatically will going to make your paragraph and will make your sentence in a form of paragraph. So ये कुछ styles हैं जो आपको यहाँ पे, जो मैंने आपको यहाँ पे एक से एक जो है style I have briefly explained you that where you can use these styles. Normally ऐसा होता है कि these all features, these all styles will going to simple is that you can use it by making if you're going to use it, so you are going to create good and effective document that will show a professional look, and this will going to impress a viewer. Or if you have any write any essay or any you have done any type of work, so it will going to be present more effective and more good. So these things we will going to use in our session, and I will going to give you any homework, so you're going to definitely you will going to use these styles so that I can know that you will be well aware of this feature. Other than this, you can have any questions, so you can ask in the chat box related to anything you want to ask. So now moving ahead, we can have also a change style option we have. Like if you're going to select this line and then we're going to shift set. अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत सारे जो हैं स्टाइल्स यहाँ पे शोन हो रहे होंगे. सब जो है वो फॉन्ट स्टाइल ही है, ब्लैक एंड व्हाइट स्टाइल, यानी कि नॉर्मल स्टाइल जो कि हमने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है. अदर देन दिस डिस्टिंक्टिव स्टाइल यहाँ पे जो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी टेक्स्ट के अंदर. जैसे कि पहले ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल सिंपल फॉन्ट के अंदर है. इफ आई विल गोइंग टू यूज अ डिस्टिंक्टिव फीचर, सो माय टेक्स्ट वुड नाउ इन अ स्मॉलर फॉन्ट. And if I will use further designs like elegant, so now you can see that the text was now in a light form, यानी कि कलर जो फॉन्ट है उसकी कैपेसिटी जो है वो थोड़ी कम हो चुकी है. Other than this, you can choose a fancy design as well. You can choose a formal style as well, manuscript style as well, modern, newsprint style as well. तो यहाँ बहुत सारे जो है आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे स्टाइल्स नजर आ रहे होंगे. आप यू कैन चूज एनी स्टाइल related to
You can choose any style related to your project. Okay, so we have the participants which are joining us. Okay, other than this, we have colors as well. Like you can choose any color combination, or you can be make any color selected for your टेक्स्ट लाइक यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ पे कलर यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं, आप अपनी अपनी खुद की एक न्यू थीम भी क्रिएट कर सकते हैं. नॉर्मली ऐसा है कि इसमें यह है कि आपका जो पूरा जो टेक्स्ट है वो जो है कलर्स के अंदर चेंज हो सकता है, पर इसके अंदर ये है कि नॉर्मली आप इसको अपनी हेडिंग्स वगैरह में यूज करें तो ज्यादा बेहतर है. नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर इसका जो इफेक्ट है इतना ज्यादा नहीं होगा. अगर आपने कोई हेडिंग सेलेक्ट की है या आपने कोई भी स्टाइल इस सब चीजों में से कोई सिलेक्ट किया है, देन दिस फीचर विल गोइंग टू अप्लाई कलर फीचर. ये सो यहाँ बहुत सारे जो फीचर्स आपको दिए हुए हैं. आप अपनी इन कलर कॉम्बिनेशंस को यू कैन यूज इन योर हेडिंग्स एज वेल, इन योर टाइटल एज वेल, और इन योर सब्सक्रिप्शन और इन योर सबटाइटल एज वेल. सो यहाँ पे बहुत सारी जो है आप कलर कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं जो कि आप अच्छी तरह से अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं. बहुत सारी वैरायटी आर अवेलेबल इन 2010 अपडेट, सो यू कैन मेक एट लीस्ट अ बेस्ट इन अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट. आप अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट जो है, अच्छे से अच्छी चीज आप यहाँ पे आराम से बना सकते हैं. यहाँ पे कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो, एंड यू विल गोइंग टू लर्न many things like I have told you in previous session as well, when we go to complete our whole Microsoft Word tutorial, so then we're going to move on to the reports, resume, CVs, and these all are the things which we're going to create on this Word. So these all are the part of our course and part of our Microsoft tools, which is Microsoft Word. Other than this, you can change a font as well through this. Like there are many fonts you can see which you can use from here. यहाँ बहुत सारे आपको fonts नजर आ रहे होंगे, and you can choose any of the font you like and which is relatable to your document. These all are the designs. You can choose any of the design you want to choose. So other than this, you can have the paragraph spacing as well. Like you can make the paragraph open, relax, double. So actually these are the for a paragraph. यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको एक लाइन यहाँ पे मेंशन मैंने की हुई है, तो इससे आपको इतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं नजर आ रहा होगा. पर अगर आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं, so definitely that paragraph would be affected by these things. Like let's take an example. Like अगर मैं यहाँ कोई पैराग्राफ टाइप करता हूँ, so wait a second, I want to copy any paragraph, then I want to show you. Wait a second, please. I will go take any paragraph and then I will to paste it there. Kindly wait a second, please. Okay, so I have copied it and now I'm sharing my screen. Let me know that my screen is visible for you all or not. Okay, so I've copied my link only, and now I will going to make it as like this. This is now simple एक roughly सा जो है ये paragraph जो है आपको display हो रहा होगा. So this is actually a paragraph which is consist of 4 lines. So we can say it's a paragraph, roughly सा कोई paragraph we have generated. So now I will going to tell you that how the paragraph spacing design will going to work on it. Like if you will going to use the no paragraph space, then your whole paragraph would be compacted, would be joined with each other. Like अब आपकी lines के दरमियान कोई भी gap नहीं है. So now your whole paragraph would be now compacted. Or if I will use the option compact, so compact or no paragraph space is simply they are all each other. ये दोनों जो है वो एक जैसे ही हैं. So if I will use tight, so it will going to provide you some space in between the lines. Or if I will use open, so it will going to be more it will going to provide you more space. So यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा. अभी मैंने अगर नो पैराग्राफ स्पेस चूज किया है, तो देखिए लाइंस कितनी जो ज्यादा जो है वो स्मॉल है, पर अगर मैंने ओपन चूज किया है, सो यू विल गोइंग टू गेट मोर स्पेस इन बिटवीन द लाइन. एज सेम वे इफ यू गो टू चूज रिलैक्स, so see there's now much space in between the lines. And if you're going to add double,
So your paragraph would be increased, your lines would be increased in double form. अब आपको यहाँ पूरी पूरी डबल लेंथ में जो है आपको स्पेस मिल जाएगी, तो इस तरह जो है अपना पैराग्राफ भी बना सकते हैं. If you want your paragraph to be tightened, so you can choose your paragraph, you can choose any font, like you can choose no space, and if you want space in between the lines, so you can choose the double style font. So इस तरह जो है आपने पैराग्राफ को और ज्यादा अच्छा और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं. और you can use any of this thing, you can use any other font you want to choose. Okay, so now moving ahead, and now we're going to move in insert tab. Like अब जो है हम अपना insert tab की तरफ जो है हम बढ़ रहे हैं, and we have previously we discussed about the pictures and tables. Now we're going to use a clip art option. It's actually a old feature, but I want to tell you, clip art actually normally ये होता है कि इसमें usually आप कोई भी अगर कोई एलिमेंट अगर आप मेंशन कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट, तो कुछ भी आप जो है यहाँ पे एलिमेंट टाइप करते हैं, इफ दैट वाज अवेलेबल ऑन योर अपडेट, अगर आप वो जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट टूल्स में अगर वो मेंशन है, सो यू कैन यूज इट. लाइक फॉर इंस्टेंस आई कैन चूज computer. I can search the computer, and I can choose the computer, and then I will go to press go. Then you will go to get many pictures related to computers. So इस तरह जो है आपको बहुत सारे elements, बहुत सारी clip arts मिल सकते हैं, जो भी कंप्यूटर से जो भी आप यहाँ पे mention करें image. So I can select this. So this how you're going to get the clip art picture from this option clip art. So यहाँ पे आप कोई भी अपनी जो है image mention कर सकते हैं. Like if you are writing on something, like if you are writing on any other topic which is related to any image, so you can for explaining it more vastly, you can paste any picture as well, any clip art as well. So this is actually an option, or you can select any more thing as well. आप यहाँ पे और बहुत सारी जो है वो चीजें टाइप कर सकते हैं, and you can get those thing in your documents. अभी फिलहाल मैंने कंप्यूटर की एग्जांपल ली है, so you can be aware of that. Other thing, you can have shapes feature as well. This feature was already in 2007 update, so it was same, it haven't changed. So यहाँ पे बहुत सारे आपको shapes मिल जाएंगी. Any thing which you have to add, any arrow, any dialog box, square, rectangle, many shapes are available. I can give you an example of any shape like square. You can draw any square, and then you're going to get these features like format tab would be appear. आप उस शेप को डिफरेंट एंगल्स में यू कैन चेंज इट एज वेल. आप उसको एडिट कर सकते हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू लाइक दिस, बहुत सारे कलर्ड ऑप्शन है. आप उस शेप को आप कलर कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अगर आपको शेप के अंदर जो है वो लाइट कलर्स चाहिए, यू कैन चूज एनी लाइट कलर एज वेल विद द बाउंड्री. So let's take an example of any of the color. Like I can choose this red color. So this thing you can change the color of the shape. यहाँ पे आप कोई भी अपना color यहाँ पे insert कर सकते हैं. And if you are not liking any of the font which are present here, so you can add your own color as well. आप इस shape पे अपनी मर्जी का भी color fill कर सकते हैं. Like this shape fill are there. आप यहाँ पे कोई भी color जो है आप इस shape पे fill कर सकते हैं. And then you will going to be well aware of these colors. Other than this, you can add a picture in this shape as well. Like आप यहाँ से कोई picture भी जो है insert कर सकते हैं. This how यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना logo जो है example के लिए choose किया है, and then the logo was now in the shape. As same way you can add any other shape, and you can change say size of the shape. You can make it large, you can make it stretched, you can make it small as well. So this thing you can use this image as well in the shapes. Other than this, you can, if you don't want any color or any shape in or any picture in this shape, so you can add the gradients as well. But before that, I want to remove this picture. Okay, so I have removed the picture, and if you want the shape fill with the gradient, so you can choose any gradient color as well. Like आपको अगर कोई भी कलर नहीं चाहिए, आपको कोई पिक्चर अपने जो है उसको अपने शेप के अंदर नहीं चाहिए, so you can add any gradient color as well. यहाँ बहुत सारे डार्क वेरिएंट्स भी हैं, लाइट वेरिएंट्स भी हैं. आप कोई भी वेरिएंट आप चूज कर सकते हैं उस कलर का जो मैं सेलेक्ट किया. अगर आप कोई भी जो है वो फिल नहीं करते, सो आपको जो है वो ग्रेडियंट इतना ज्यादा नहीं वो अफेक्टिव लगेगा. आपको कोई कलर चूज करना है, देन यू कैन ऐड एनी gradient of that color as well to make your shape, to make your image more effective. Like मैं जो यहाँ पे light variant choose कर लेता हूँ for example. And then other than gradients, you can also use textures as well. There are many textures in this update. आप यहाँ पे कोई texture भी जो है वो choose कर सकते हैं अपनी shape के अंदर. Like अब मैं जो हूँ ये वाला जो है I can choose this
parchment texture and in my shape. So this how you can change the shape fills. You can insert the color as well. You can insert the gradients as well of that color. You can insert texture as well. You can insert picture as well. There are many options you can insert in your shape. Not only the square shape, but you can choose any shape you want to add. अदर देन दिस यू कैन हैव शेप आउटलाइन. आप जो इसकी शेप आउटलाइन भी दे सकते हैं. अगर आपको जो है आउटलाइन डिफरेंट कलर की देनी है, सो यू कैन ऐड एनी डिफरेंट कलर फॉर आउटलाइन एज वेल, like any red, green, or any light color you want to give. So you can give any light color as well. I can take an example of blue color, so I choose the blue color. Other than this, you can make your weight. Like अगर आप जो है अपने बाउंड्री का वेट भी इंक्रीज कर सकते हैं. अगर आपको जो है you want any thick lines, you can choose any thick line as well, and these lines were shown you here. What actually size you want, you can choose from there. If you want a thick line, you can choose a 6 pt lines. So this how you can get the thick line and thick outline. Other than this, you have the many designs as well. आप जो है आपके पास बहुत सारे different designs भी आ सकते हैं. Wait a second. Mohsin Abbas, your mic is open. You have to close your mic, and if you want to say so, you can raise your hand. I'm going to allow you to say. Okay. So now moving ahead, and we are talking about the designs. Like यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे dashes, यानी कि बहुत सारे designs you can get for your outline. आप यहाँ पे बहुत सारे designs, कोई भी design आपको choose करना है, so you can get your design as well. इसके अलावा आपको और सारे design मिल सकते हैं. If you're going to click on more lines, if you're going to click on more lines, you can get more lines for your shape. आपको यहाँ बहुत सारे लाइन के शेप्स मिल जाएंगे. लाइक यू कैन गेट कंपाउंड टाइप. आपको अगर सिंपल लाइन रखनी है एंड यू वांट टू यू जस्ट वांट टू मेक योर लाइन थिक, so you can adjust your line, you can make your line thick, and then you are going to get more design. आपको simple line के अंदर ही बहुत सारे designs मिल सकते हैं. How? Let me show you. आपने जो है सिंपल आपने आउटलाइन रखी है, बिल्कुल बिल्कुल आपने कोई थिक नहीं, बिल्कुल थिन लाइन रखी हुई है, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट मैनी डिजाइंस फ्रॉम दिस एज वेल. More lines, and then you're going to choose any of the shape you want to. I have choose this. I have used a triple line design. Now my line would be now in a triple form. Other than this, you have many designs as well. Like आप यहाँ पे और ज़्यादा dashes use कर सकते हैं अपने designs के लिए. आप shadow, reflection, ये सब चीजें जो है हमने उसमें image में भी जो है last session में we have discussed, like you can give your image a shadow as well. The same way you can give the shadow, reflection, glow to your शेप एज वेल. आप शेप को भी जो है वो ग्लो दे सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं, एंड यू कैन गेट आर्टिस्टिक फीचर एज वेल. crop your shape as well, picture correction as well. If you have insert any picture in the shape, so you can adjust the picture as well. आप वहाँ picture को भी edit कर सकते हैं same way which you have add a normal picture. जिस तरह आप एक normal picture को edit करते हैं, उस तरह आप यहाँ पे brightness increase कर सकते हैं, आप contrast increase कर सकते हैं, आप color change कर सकते हैं. बहुत सारे different textures आ रहे हैं, आप उनको कर सकते हैं. आप sharpen, soften, आप कुछ भी जो है कर सकते हैं. अपनी image को जो है और ज्यादा जो है वो वाइट कर सकते हैं. मतलब बहुत सारी जो है डिफरेंट यहाँ पे आपको आर्टिस्टिक फीचर और पिक्चर करेक्शंस जो है वो मिल सकेंगे. अदर देन दिस, you're going to get the shape effects. Same effects are there as we have discussed for the image. यहाँ पे आप बहुत सारे, यहाँ पे आप ग्लो, यहाँ पे आप जो है सॉफ्ट एजेस, स्ट्रॉन्ग एजेस, रिफ्लेक्शन, शैडोज, ये बहुत सारे बहुत वास्ट फीचर्स है. if I will going to if I will going to make you clear each and everything, so our session would be very lengthy. So आप इन सब चीजों को खुद से जो है आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे. आप खुद से इन सब चीजों को अपने एक्सक्यूज मी आप इन सबको जो है खुद से जो है आप ये सब आप यूज करेंगे अपने डिजाइन्स में, और फिर जो है आपको एक डॉक्यूमेंट जब आपको होमवर्क दिया जाएगा इससे रिलेटेड, तो आप जो है वो बना के हम सबको शो करेंगे. सो ये सब चीजें जो है अपने जरूर यूज कीजिएगा अपने जो है कहीं ना कभी कोई भी अगर आपको कोई टास्क मिलता है सो उसके अंदर. ओके, वी हैव 7 minutes remaining for our session. So we want to discuss one more thing in these 7 minutes, like okay, so we're going to use one more thing. I have left it, like if you want to add any text inside this shape, like अगर आपको कोई text in shape के अंदर insert करना है, so you have to simply
go to the shapes. I am telling you the basic level. आपको मैं बिल्कुल basic बता रहा हूँ कि वरना normally तो आप shortcut तरीके से आप यहाँ से भी आप image select कर सकते हैं. यहाँ भी एक area है, you can choose there any shape. So you can see this text box. You have to use this text box for getting any text in the shape. आपने यहाँ पे जो है एक बॉक्स क्रिएट किया एंड नाउ यू कैन इंसर्ट व्हाट यू वांट टू इंसर्ट, एनी टेक्स्ट यू वांट टू इंसर्ट. आप यहाँ पे कोई भी जो है टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, बट ओनली इन अ स्क्वायर शेप. आप सिर्फ स्क्वायर शेप के अंदर कोई भी टेक्स्ट जो है इंसर्ट कर सकते हैं. ना सिर्फ टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं बल्कि आप उसके अंदर कोई इमेज भी, और जैसी जो मैंने आपको बताया है ग्रेडियंट टेक्सचर, आप सब कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, बट विद द टेक्स्ट एज वेल. सो इफ यू वांट टू ऐड टेक्स्ट इन योर शेप, सो यू हैव टू चूज अ टेक्स्ट बॉक्स. Other than this, you can choose styles as well. Like आपने जो text insert किया है, मैं इसकी एक line जो है वो copy कर लेता हूँ. आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने टेक्स्ट इंसर्ट किया है, सो यू कैन एडिट योर टेक्स्ट एज वेल. आप जो है फॉर्मेट पे जाके आप इस टेक्स्ट को भी ग्लो दे सकते हैं, टेक्स्ट की रिफ्लेक्शन भी आप शो कर सकते हैं. यू कैन शो द ग्लो ऑफ दिस टेक्स्ट एज वेल. लाइक यू कैन सी दैट देयर आर मेनी डिफरेंट कलर्स यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन्स. यू कैन एडजस्ट योर text through bevels as well. You can add a 3D rotation as well. Like see, we have a 3D rotations. You can see in my screens there are many 3D rotations, and you can do this as well. You can transform this as well. Okay, this is a new feature of 2007 update or 2010 update. यानी कि 2010 के अपडेट में एक नया फीचर है which is transform. आप अपने इमेज को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं. लाइक सी, आपके यहाँ बहुत सारे जो हैं वो स्टाइल्स हैं, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन है दैट यू कैन ट्रांसफॉर्म योर टेक्स्ट इन मैनी स्टाइल्स. लाइक आप जो है यहाँ पे सर्कल फॉर्म में भी कर सकते हैं. आप यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म पे आप यहाँ पे स्टॉप फॉर्म में भी कर सकते हैं. मतलब यहाँ बहुत सारी जो है आपको यहाँ पे रैप्स दिए हैं. दिस ऑल वर कॉल्ड रैप्स. सो इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं. यू कैन डू you can take any of the font and you can transform your text. I will going to choose this for taking an example. यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो है वो एक रैप ले लिया है. नाउ यू कैन सी दैट नाउ माय टेक्स्ट वाज इन अ slide form. Students kindly join the session. This is a computer course. Students kindly. So it's actually a slide form. So you can do this as well. Okay. Now, other than this, you can change the color of this text as well. Like आप जो है अगर आपको कोई theme color mention करना है, you can do that as well. Any color you want to add, so you can add in this thing as well, like blue, orange, green, any of the thing you want to add. Other than this, you can make your quick style as well. यहाँ पे बहुत सारे आपको डिजाइन हुए हुए स्टाइल्स मिल सकते हैं fonts के. You can choose any other style you want to add, any other style like blue, or you can choose a aqua accent as well. So यहाँ ये styles जो है आपकी टेक्स्ट को और ज्यादा जो है वो इफेक्टिव शो करेंगे, और ज्यादा जो आपने जो चीज मेंशन की हुई है आपने और ज्यादा उसको जो है वो अच्छा प्रेजेंट करेंगे in front of the viewers. So you can take any of the style from here. I can choose this font. Okay, so this how you can create any text in your text box. आप किसी shape के अंदर इस तरह आप कोई भी चीज आप mention कर सकते हैं. You can paste it anywhere you want to paste. Okay, now if you have any type of query, so you can ask in the chat box, or you can open a mic and I'll ask anything you want to ask related to today's session. Today we have discussed about the shapes, especially about the shapes, and especially about the headings in the home tabs. Like this, we have discussed that how you can give the style of your heading, of your if you have entered a subtitle or you have entered a title, so how you can give the style of that. So यहाँ पे अपने styles today आज के सेशन में हमने डिस्कस किए हैं. हमने जो है शेप्स डिस्कस किए हैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में, और इन नेक्स्ट सेशन वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाउ यू कैन इंसर्ट चार्ट्स, flow charts, and how you can add header, footer, page numbers, and these all are the things which are related to CVs. And if you are creating CVs, resumes, और कोई भी अगर आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, so these all features are used in that. So we're going to might discuss in next session at how you can create a professional report. So क्या पता next session में हम इस चीज को discuss करें. Today is going to upload the home task in the Google Classroom. So those who have not joined the Google Classroom yet, so kindly join the Google Classroom. Other than this, you have to submit the homework in the given time. You have we have allotted you the whole weekend. Like you have to submit now the home task on Friday, the first session of the weekend. Friday, you have to submit the home task. Kindly
make it serious, because these all points, these all marks would be added in the form of certificate on your on your in the form of percentage on your certificate. So you all have to participate in it. You don't have any query, you have understood each and everything, all the participants, your participation would mark your attendance. So kindly type in the chat box or open the mic and speak up, so that I can know that you are present in the session and you have gone through each and everything. Anyone kindly, so that I can end up a session. Okay, we have received one chat. Okay, no doubts. Another and anyone else? Okay, acknowledge. Okay, so now we have less than 1 minute remaining. So we have ended our today's session here, and we're going to continue in the next week. We're going to meet you on Friday next week with the new topic, which was about the reports. We want to know at how we can create reports. So I want a full attendance, and I want active participation in the group as well. Okay, the participants are writing no doubts, acknowledge, yes sir, no doubts. Okay, thank you so much everyone. Now I'm ending the session. Your recording will be updated on the Google Drive as well, and as well as it will be uploaded on the YouTube channel. So now, as you all know that we have created our YouTube channel as well, so the videos links would be shared in the group as well, and you can get these sessions, these recorded session on Facebook page as well, so you can go there and you can gone through these things from there as well. We have created many platforms for you all, but you have to be serious for these scores. Okay, so now we are ending our session. Thank you so much for being here. Allah Hafiz.